ऑलराइट, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि काउंटिफ कैसे यूज करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिनारियोज एज पर द फिल्टर दैट वी हैव सिलेक्टेड हम काउंटिफ को कैसे एक्सटेंड करके यूजिंग इफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज हम काउंटिफ यूज करके एक हमारे परसेंटेज हमारे केपीआईज लेके आ सकते हैं. नाउ व्हाट वी ऑल्सो सॉ वाज कि हमने वीक 4 के लिए काउंटिफ मार के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लाया एंड देन फॉर वीक 3 वीक 2 वीक 1 हमने कुछ सेल्स लॉक किए. इन अ वे हमने मंथ का सेल रेफरेंस लॉक किया, क्यू नेम का सेल रेफरेंस लॉक किया, एनालिस्ट नेम का सेल रेफरेंस लॉक किया, एंड देन वी कॉपी पेस्टेड द नंबर और द फॉर्मूला टू राइट so that we get week 3 week 2 week 1 KPIs as well. Now सो समटाइम्स तुमने नोटिस किया रहेगा कि ये लॉक करने का सीन है ना थोड़ा डिफिकल्ट है. लाइक व्हाट इफ यू फॉरगेट टू लॉक अ पर्टिकुलर सेल. अगर एक पर्टिकुलर सेल में लॉक नहीं किया और फिर मूव किया तो नंबर गलत हो सकता है या एरर आ सकता है. नाउ दैट द होल लॉकिंग थिंग इज समटाइम्स कैन बी कंफ्यूजिंग एंड समटाइम्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. सो व्हाट आई वांट टू शो यू इन दिस वीडियो इज कि हमारे जो 3 फिल्टर है अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया, विच आई शो यू हाउ. अगर इस फिल्टर को डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे इस काउंटर स्टेटमेंट में जहां पे हम फिल्टर यूज कर रहे फॉर एग्जाम्पल से अपडेटेड मंथ का फिल्टर है. अब मंथ का फिल्टर विच इज इन सेल J8. अगर मैंने J8 के जगह पे मैंने नाम दे दिया फिल्टर को एंड आई कॉल दैट नेम फॉर एन एग्जाम्पल फिल्टर अंडरस्कोर मंथ, तो मुझे J8 के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ J8 आई कैन जस्ट से समथिंग कॉल्ड एज फिल्टर मंथ. ओके, एंड एनीवेयर आई यूज फिल्टर अंडरस्कोर मंथ द फॉर्मूला विल वर्क. द फॉर्मूला विल टेक ऑगस्ट ऑटोमेटिकली. मेरे को S8 जाके लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो. सो टू स्टार्ट विथ, लेट्स नेम आवर फिल्टर्स. हमारे 3 फिल्टर है, मंथ, क्यू नेम एंड एनालिस्ट. विल डू दैट रियल क्विक. So we go to formulas and then we go to name manager, and you will see that at this moment we have a table raw data. So it's a name table. हमने एक टेबल है raw data. उस raw data table को हमने नाम दिया table underscore raw data, which is also called as creating a dynamic table. Okay, so similarly we'll create our dynamic filters or kind of name our filters. So let's start with the month. हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. Now because it's a filter, I would like to call it as FLT. FLT stands for filter. तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, शाहरुख खान भी लिख सकते हो, but it doesn't, it won't help to identify what you did. So name it appropriately. ऐसा कुछ नाम दो जो तुम बाद में याद रहे कि ये क्या है. तो FLT stands for filter, and I'm going to say month. FLT underscore month. Maybe I can just type this is a named filter for month, something on those lines. एंड देन ये बोलेगा कहाँ पे है तुम्हारा तुम्हारा जो फिल्टर तुम बना रहे हो, तुम फिल्टर मंथ, वो कहाँ पे. तो आई नो इट इज इन दिस सेल एंड देन आई एम गोइंग टू से ओके. Similarly, I can create 2 more filters for Q name and list name. So I'm going to say FLT underscore Q, and then I'm going to say this. Okay, so Q is in M8, and I'm going to say OK. And you'll see currently अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, see FLT month is giving you August and FLTQ is giving you consumer existing. So whatever that you select in your filters, these name filter will have that value. Okay, so let's create the last one. FLT underscore analyst, and then I'm going to say this is here. Okay, and this should have all in it. Okay, so हो गया. Now let's say close and let's update our formula. अब फॉर्मूला का क्या करना है, जहां पे भी J8 है, आई एम गोइंग टू चेंज दैट टू फिल्टर मंथ. So the way you want to replace a value or anything in a cell is by doing Control H. So select that cell and do Control plus H. H is in hat or Control H.
and then you will get something called as find what and replace it. तो मेरे को क्या ढूंढना है यहाँ पे देखो J8. So I'm going to say find $J8. Okay. And I replace it with what? I want to replace it with FLT underscore month. Correct? And let's say I want to replace this in this cell. So I'll say replace. And the formula should still work. But as you can see, if you go back to this cell, FLT month आ गया यहाँ पे, FLT month यहाँ पे आ गया, FLT month पे यहाँ पे आ गया. Everywhere FLT month is now has replaced the earlier cell reference which was J8. Similarly, I can say जहाँ पे मैंने week तो that's fine. Week का हमने filter नहीं बनाया, so forget about it. Outcome approved है. Where what else you want to change? We want to now change the updated Q which is in M8. So I'm going to say $M$8 and replace it with a FLT Q. I'm going to say replace. See, I go back to the cell and you will see FLTQ here, FLTQ here. Okay. What else we want to change? We want to now change the analyst. So analyst is कहाँ पे था ये analyst? It's in Q8. So I'm going to say Q8. I'm going to change it to FLT underscore analyst. I'm going to say replace. Alright, so the formula, the output will remain the same. The value should not change. Be careful. अगर 63 का कुछ और आ गया, so be careful. You have to check again. So alright, so now we have replaced everything. I think week के लिए कुछ करना नहीं था. So now this is looking good. Alright, and you see ये भी change हो गया FLT क्योंकि यहाँ पे भी cell references था. So this is pretty good. Now I'll say close. Now one thing I also want to do is हम एक सेल में ही क्यों करें ये हर जगह यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जहां पे भी हमने ये सेल रेफरेंसेस यूज किया रहेगा J8, I think M8 और Q8, we'll replace it in all the cells. So I'm going to select all of this. I'll say Control H again and let's start with analyst. तो जहां पे भी फॉर्मूला में Q8 लिखा रहेगा, I want to change it to filter analyst. So I'm going to say replace all. Alright, so the formula, the numbers should not change. Be careful. And now, next I want to change this to J underscore 8, which was month. And I'm going to change this to FLT underscore month. I'll say replace all. Alright, done. And then next one was $M$8. And I'm going to replace it with FLT underscore Q. Replace all. Done. Now if I change this, you should get all your older values without any problem. Now if I want to change this to July, so number should not change. Be careful. And अगर तुम्हारा number change हो रहा है तो be careful कि तुम replace सही से कर रहे हो. Everything should work as is. It's just that now reading the formula becomes easier. So now you know कि filter Q क्या है. You don't have to hunt कि भाई ये S8 क्या है, ये J8 क्या है, ये Q8 क्या है, M8 क्या है. You can now know what you're looking for. It makes your life easier. And now if I want to copy this formula, say यहाँ से लेके all those to week 1, you don't have to worry about locking anything, or locking any cells. Everything should work as is. It will make your formula a lot easier. Okay, all right. So please make a habit. If you haven't done this, अपने filter को नाम दो by going into formulas and then going into name manager and calling it out here, and then start using them in your formula. आगे के वीडियोस में जहां पे भी काउंटिव का फॉर्मूला आया, जहां पे हमें ये फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, make sure you don't use the cell reference in your formula. Use the name of your filters. All right. I'll see you in the next video. Bye.